Good afternoon, dear students. We have discussed about the previous condition, the menstrual cycle, phases of menstrual cycle, changes in different phases. Today we have discussed about the remaining part of the human reproduction part, that is the fertilization, implantation, and later on embryological development, fetal development, partitution, and lactation. All these points we will discuss one by one. So first of all, here is the particular term will be there, that is the fertilization. In case of fertilization means what? It is a process. Fertilization is a process. In that process, what will be happen? Fusion of gametes. Fusion of gametes. Fusion of gametes is known as fertilization. For example, in case of human being, we have one term is there, that is the sperm. Another term is there, that is the ovum. So both are the gamete. Sperm and stage plus ovum and stage, and both are fused. They will be changed to the 2N, and their structure is known as the zygote. What condition is there? Zygote. And the zygote is responsible for the development of embryo. The sperm and ovum will be fused. The process is known as the fertilization. But friends, what happened? Here is the one thing is there. A male have the intercourse with female. In other words, we can say copulation method will be there. By the intercourse or by the coitus, a male have released the semen in the female vaginal tube. Male have released the semen in the female vaginal tube, then that part is known as the insemination. What term is there? Insemination means releasing of semen in vagina. Because here is the particular term of fertilization. Insemination is the primary condition for the fertilization. Fertilization takes time two types. One is the external fertilization and another is the internal fertilization. External fertilization means what? The male and female gametes is fused outside of female body, and male and female gametes are fused inside of female body, that is the internal fertilization, and the human being have just internal fertilization. So we have just go through the particular these terms. Term number one, that is the insemination. In case of insemination means a male have released the semen in the female vaginal part, that is known as the insemination. So insemination during the coitus or the copulation, the semen is released into the vagina by the penis. That part is known as the insemination. A male have released the semen in the female vaginal region by the penis. Then that part is known as the insemination. What term is there? Insemination. यानी मेल से फीमेल के साथ में इंटरकोर्स करता है. Coitus relation will be there. Copulation method will be there. Then the semen is released in vagina. That is the insemination. The motile sperm swim rapidly through the cervical region of the female reproductive tract, enter into the uterus and finally reach the ampule region of the fallopian tube. देखो, fertilization is the fusion of male and female gamete. सबसे पहले insemination होगा. Insemination के बाद में जो सीमन होगा वो रिलीज किया जाएगा, वो वेजाइना में किया जाएगा. वेजाइनल रीजन से वो सेरेविक्स पार्ट के साथ होता हुआ यूट्रस में आएगा, यूट्रस से चलता हुआ फैलोपियन ट्यूब में आएगा. लेकिन फैलोपियन ट्यूब में कौन से रीजन आ जाएगा? एम्पुलरी रीजन. When the ovum is released by the ovary and transfer into the ampullary region and the fallopian tube of the fallopian tube, अगर जिस समय मेल फीमेल के साथ इंटरकोर्स कर रहा है, उस इंटरकोर्स से सीमन यानी इंसेमिनेशन होता है. इंसेमिनेशन से जो स्पर्म है वो वहाँ से स्विम होते हुए
पहले आपके पास में कहाँ से आएंगे? फर्स्ट केस नंबर 1, वहाँ से चलते हुए पर्टिकुलर टर्म के रूप में आपके पास में आ जाएंगे वेजाइना, वेजाइना के बाद सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। जिस समय फैलोपियन ट्यूब में पहुंच रहे हैं उस समय ओव्यूलेशन हुआ है, ओव्यूल ट्रांसफर हो चुका है फैलोपियन ट्यूब में, देन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। उस टाइम में फर्टिलाइजेशन के चांस रहेंगे। If ovum and sperm are simultaneously transferred into that particular term or the part at the particular part and term of the fallopian tube, यानी जहाँ पर आपके पास में गैमेट्स है वो फ्यूज हो जाते हैं। कहाँ पर फ्यूज होंगे बताओ? फैलोपियन ट्यूब में। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इट्स ओके, बट ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन वेयर टेक्स प्लेस, देन योर आंसर फैलोपियन ट्यूब। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेल सीमन को फैलोपियन ट्यूब में छोड़ेगा। नो, मेल हैव ओनली द इंटर रिलेशनशिप और द कॉपुलेशन मेथड विथ ओनली वेजाइना रीजन। वेजाइना में इंसेमिनेशन हो जाएगा, वहाँ से सीमन रिलीज होता हुआ, वहाँ से आपके स्विम होते हुए स्पर्म्स होंगे, वो सेरेविक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो रीजन के पास आ जाएगा, स्टमस के पास आ जाएगा, और उसी टाइम में उधर से फीमेल गैमेट्स में ओवम आ जाएगा ओव्यूलेशन से, तो वो फ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अनदर पार्ट, हियर इज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द पर्टिकुलर पार्ट, मीन्स हियर इज द fertilization means the fusion of male and female gamete. It is the fusion of sperm and egg cell. I have already discussed with you. Sperm is male gamete, egg is female gamete. During the fertilization, sperm induce the changes of zona pellucida. क्वेश्चन आ चुका है कि जैसे ही sperm ओवम के zona pellucida पे आ जाता है, कहाँ पर आएगा बोलो? zona pellucida. The sperm takes place at the part of zona pellucida. कहाँ पर आएगा? स्पर्म सबसे पहले इंड्यूस द चेंजेस एट द ओवम आउटर लेयर ऑफ जोना पेलिशिडा एंड ओवम ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। एक क्वेश्चन आ रखा है कि जैसे ये आपके पास में ओवम है और देयर इज द नंबर ऑफ लेयर्स विल बी देयर एंड नंबर ऑफ स्पर्म सराउंडिंग दैट ओवम, नंबर ऑफ, नॉट ओनली वन, बट ओनली वन स्पर्म इज फ्यूज्ड with ovum. Why? Then your answer, when the sperm induce the changes at zona pellucida, sperm zona pellucida layer को induce कर देता है, तो ovum अदर sperm के लिए एंट्री को ब्लॉक कर देता है। That's why only one sperm is fused with one ovum. इसमें आपके पास में वन स्पर्म होगा, वो वन ओवम के साथ ही फ्यूज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक स्पर्म ओवम के जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, वो उसको इंड्यूसली चेंजेस करेगा। चेंजेस होते ही ओवम अपनी जोना पेलुसिडा को ब्लॉक कर देता है एडिशनल स्पर्म के एंट्री के लिए। दैट्स व्हाई वन स्पर्म कैन फ्यूज विद वन ओवम। द सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम, जो आपने स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उस स्पर्म के स्ट्रक्चर में ये वाली रीजन था आपके पास में एक्रोसोम। व्हाट कंडीशन इज देयर? एक्रोसोम। एक्रोसोम इज द लेयर विच कैन बी कंसिस्ट विद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोएंजाइम विल बी सीक्रेटेड। और वो लाइसोएंजाइम एक्रोसोम में स्पर्म के साथ में ओवम की जो जोना पेलिशिडा लेयर होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें एंट्री कर जाता है। अगर एक्रोसोम फंक्शनिंग नहीं है तो स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जोना पेलिशिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंट्री नहीं हो सकती। नेक्स्ट, दिस इंड्यूस्ड सेकेंडरी oocyte to complete the meiosis. This is begin at the unequal division. It result the formation of secondary polar bodies and haploid ovum. The haploid nuclei of the sperm and ovum fused form the diploid structure, and that is known as the zygote. Zygote is the diploid. And means 23 chromosome from sperm, 23 chromosome from the ovum, and they are the fused, and that halves form the zygote, and zygote contains the total number of chromosome 40.
46 and zygote contain the 46 chromosome. But you have one question is there. The determination of sex. Here is the one part is there. How the sex is determined in human being. But determination of the sexes depend on the male. It is the under control process? No, it is a matter of chance. Because the female is homogametic and male is heterogametic. Female homogametic, only one type of ovum, that is the only X part is there. But male, they have the heterogametic, some sperm that are X and some are the Y, which is completely dependent on the fusion of gametes. So we have the particular term is here. What that thing? First, 46. Yeah, you can say X and Y, that is the male, X and X, that is the female. Gametogenesis process takes place X, Y, X and X. That is the spermatogenesis process, that is the oogenesis process. Later on, the male side X and female side again only one chance, that is the X and X, that is the female fetus. Male side Y and female side only one part, that is the X, X and Y. Then the fetus is the male. The chance fertility, that is the 50-50%. 50% for the male and 50% for the female. Means the fetus may be male or fetus may be male and female, which is depend on the male condition. Male have both the content X and Y. But which is fused? Which is depend on the matter of chance. Maybe X is fused with X. Maybe Y is fused with X. That's why the chances is 50-50%. Same cases there, the sex of fetus is determined by the sex chromosome present in the sperm. As the female is only XX ovum, will be always carries the X chromosome. Male are XY. That Y, X or the Y. If X is fused with X, then that is a female. Y is fused with X in ovum, that is the male. So not male X and Y. So which is the matter of chance of the fertilization and 50-50% chance. That is not, female is not responsible for any type of sex determination. Sometimes the question will be there, you are a biological student. A female have continuously daughter and the society is blamed to the female. Which is the responsible factor is there? You have explained and suggest the method. Then your answer, the male is responsible, female is not responsible. There is the no lacuna in female. If female have just produced the babies of the female, it means no lacuna in female. As well as the male is also not defective lacuna, because the reason is there, it is the matter of chance of the fertility. Next, we have the one thing is there. What that thing, after fertilization, what changes takes place? In case of the changes of takes place, case number 1, at that part, that is the embryo development. In case of development of embryo, first of all, after the fertilization, we have the one thing is there. Sperm plus ovum, both are fused and form the zygote. Zygote is the primary cell for the embryo and which is diploid. Total number of chromosomes, that is the 46. Ovum have the 23 chromosome. Ovum have the 40 and sperm is also 23. Zygote is the primary cell for the embryo development. In zygote, whatever type of cell division is there, all type of cell division, only the mitotic division, equal number of chromosomes. The zygote undergoes the mitotic cleavage. It moves along with isthmus. First of all, ये isthmus से move करेगा, oviduct towards the uterus, and it have formed the 2 cell, 2 to 4 cell, 4 to 8 cell, 8 to 16 cell. When that part, just go through that part. Just here is the condition will be there for your part. Then what condition is takes place? Case number 1, that is the zygote. Zygote have the 2 cells. There is the 2 cells.
again that have the 4 cells, and that part is the cleavage. 2 cell, 4 cell, and 4 to 8 cell. When that is the 8 cell structure, 8 to 16, that is the morula, and 16 to 32 cell, that is the blastula, and 30 to 64, that is the gastrula. Clear? Just here is the particular part of the morula. See how the particular question will be there. What that thing? First of all, cleavage to morula, and morula have the 8 to 16 cells. How much cells? 8 to 16 cells. And morula contain the division as it moves further along into the uterus. And the blastomia is arranged to and the outer layer called as the trophoblast. Now this time, one question will be there. What that question? Morula आपके पास में 8 to 16 cells है. Okay, and next is the blastula. Blastula is 16 to 32 cells. And sometimes the question will be there, the implantation of embryo. Implantation of embryo is only that part is the blastula, and blastula is the 16 to 32 cells. They have the 2 layers. Outer layer which is known as the trophoblast. They have this cavities there, that is the blastocele, and one particular cells will be there, that is the endopart, inner cells. Mass of cells is attached with the trophoblast. So we have this part will be there. Attach implantation always आपके पास में blastula stage में होगा. Blastula is 16 to 32 cells. IVF method is there. We have to express the fertilization in the laboratories, test tubes. That just change in zygote to the cleavage to morula, and morula to blastula. Blastula stage, that is the final stage, it means that have the development stage will be there. We have just pick out that blastula from the IVF or the test tube methods and just implant in the uterus of the surrogate mother or the real mother, and that is the attaches to the endometrium of uterus. That is the implantation of embryo. That is also the particular part of the pregnancy. The trophoblast inner cell mass differentiation into the form of embryo. Inner cell mass ही embryo बनाएगा, ध्यान रखना. Outer is only trophoblast. There is the nourishment cells is there. Tropho means nourishment. Nutrients are provided by the trophoblast. Inner cell mass is responsible for the embryo development or the fetus part. The cells of uterus divide rapidly and cover the blastocyst. Blastocyst को चारों तरफ से cover कर ले. And the blastocyst embedded to the uterine wall, वो uterine wall के अंदर embedded हो जाएगा, and that is called as the implantation. यानी ब्लास्टुला का यूट्रस की इनर सेल के अंदर इम्प्लांट हो जाना implantation है, and this leads to the pregnancy. जैसे ही implantation हो जाता है, now this time that is called as the pregnancy. But इम्प्लांट का कौन सी स्टेज में होगा? ब्लास्टुला. ब्लास्टुला किस में चेंज होगा? गैस्टुला में. और गैस्टुला have the further changes is there. So just we have go through the one particular diagrams also. Next, there is the diagrammatic changes is there. First, that is the particular part of A, that is the ovum. ये आपके पास में ovum है, haploid है. Now this time the fusion of gametes, that is the zygote. 46 chromosome. Zygote to 2 cells. Here is the 2 cells, 2 cell to 4 cells, and 4 cell to 8 cells. So now this time 2 cell, 4 cell, that part is the cleavage, and that is the morula. All the changes takes place in fallopian tubes. Just you have go through that part. ओव्यूलेशन हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी oocytes बने आपके पास में, ग्राफिन फॉलिकल्स बने, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद में ये पार्टिकुलर पार्ट यहाँ पर आ जाएगा. ए देयर इज द यहाँ पर ओवम आया और उसके बाद में ये फ्यूजन हो गया, यहाँ पर फ्यूजन हुआ. बी के बाद में सी आपके पास में, सी 2 सेल स्टेज, सी टू डी, डी टू मतलब 4 सेल्स, डी टू ई में आपके पास में 8 सेल्स, 8 सेल के बाद में 16 to 32 सेल्स. नाउ दिस टाइम दैट स्टेज इज नोन एज द ब्लास्टुला. And blastula is 16 to 32 cells. कितनी cells होगी? 16 to 32 cells stage होगी.
or just given the blastocyst implantation is there, and there is the that is just go through the 16 to 32 cell, that is the blastula. अब देखो ये सेल्स है, इस सेल में आउटर सेल है, ये आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, इन सेल को ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, ट्रोफो, और इसको ब्लास्टोसील बोलेंगे, कैविटी, और ये इनर सेल मास कहलाएगा, और इनर सेल मास ही वो है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इनर सेल मास से ही एम्ब्रियो बनेगा, ट्रोपोब्लास्ट इनको नरिशमेंट देगा, और ये इसके कैविटी के साथ में न्यूट्रिएंट पार्ट है, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और इसी स्टेज में ये इम्प्लांट हो जाएगा, एंड दैट इज द प्रेगनेंसी. नेक्स्ट, so in case of the part of pregnancy, here is the particular changes takes place in the part of pregnancy. We have just go through that part. Pregnancy and embryological development. After implantation, finger-like projection called as the chorionic villi. क्वेश्चन आ रखा है, जैसे ही एम्ब्रियो यूट्रस के इनर वॉल के साथ में प्रोजेक्शन बना करके इम्प्लांट होता है, पहली स्ट्रक्चर बनती है कॉरियोनिक विली, और कॉरियोनिक विली अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट. मैंने कहा था ट्रोपोब्लास्ट आउटर सेल के साथ होगा. द कॉरियोनिक विली आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यूज. कॉरियोनिक विली सराउंडेड होती है किससे? यूट्राइन टिश्यूज से, एंड मैटरनल ब्लड, मदर के ब्लड के साथ. इट causes the chorionic villi and the uterine tissues to becomes the integrated with each other. दोनों एक दूसरे के साथ में इस टाइप से इंटीग्रेटेड हो जाएगी. यानी एम्ब्रियोलॉजिकल पार्ट में कौन सा पार्ट? ब्लास्टोसिस्ट की सेल, ट्रोपोब्लास्ट की सेल, और सेकंड अपने पास में यूट्रस की इनर वॉल सेल्स, ये दोनों इस टाइप से इंटीग्रेटेड होकर के jointly form a structural and functional unit. Jointly form a structural and functional unit between the developing fetus and maternal body, that is known as the placenta. A question will be there. पहले chorionic villi बनी, projection बना, और placenta का development हुआ. The placenta supplies the, question आ रखा है, what are the function of placenta? हमारी जो ये आपके पास में नाभि, इसका संबंध मदर के साथ में था, वो that is the part of placenta at the previous condition. Placenta supply the oxygen, nutrient, developing embryo, and first oxygen supply करता है, nutrient supply करता है, और remove the carbon dioxide and waste from the fetus. Developing fetus. अब क्वेश्चन है, एक embryo और एक fetus. What is the difference between the embryo and fetus? Embryo is only the cellular structure, and fetus is those structure where is the organ are formed. जहाँ पर ये डिटरमाइन हो जाता है कि that is the leg, that is the hand, that is the head, that is the tail, etc. That is the fetus. Organogenesis हो जाता है, वो fetus है, और जब तक सेलुलर फॉर्म रहता है, that is the embryo. And generally the fetus will form at the 3-month structure later. So function of placenta. What is placenta? What is chorionic villi? Now this time, only the particular placenta is not only the particular part of relationship between the mother womb and the developing embryo. They have just endocrine gland also. जो आपके पास में placenta वो एक endocrine gland के रूप में function भी करती है. The placenta connected to the embryological through the embryological cord and embryonal support to the nourishment and waste to and the placenta through the embryonal cord. Additional, the placenta is function as a endocrine gland. That question is already appeared. As a endocrine gland भी function करता है. Hormones such as the human chorionic gonadotrophic hormone (HCG), human chorionic gonadotrophic hormone, and the human placentation lactogen hormone (HPL), human placentation lactogen hormone, estrogen progesterone hormone. Those hormone which is only secreting by the pregnancy. There is the two hormones especially. One is the HCG, another is SPL. That question is already appeared. Human chorionic gonadotrophic hormone. जो प्रेगनेंसी का प्रज्ञा टेस्ट आता है या कोई भी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है कि प्रेगनेंसी इज देयर और नॉट बाय विद द हेल्प ऑफ यूरिन, दैट यूरिन पार्ट इज जस्ट कंटेन द आफ्टर प्रेगनेंसी एचसीजी हार्मोन. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एचसीजी हार्मोन is only present by the pregnancy.
In the absence of pregnancy, SCG is not there. So the pregnancy test is conducted on that hormone, that is the SCG. Or those hormone which is secreted only the part of pregnancy, then SCG and HPL. Later in the pregnancy, another hormone called as the relaxin. ध्यान दें, रिलैक्शन हार्मोन प्रेगनेंसी के पोस्टीरियर टाइम में रिलीज होगा, जिस समय बर्थ कैनाल की साइज बढ़ जाएगी, मसल्स लूज हो जाएगी, मिल्की ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा, उससे आपके पास में कंडीशन है वो क्लियर हो जाएगी. नाउ दिस टाइम द पार्टिशन प्रोसेस इज नियर बाय पार्ट. सो वन मोर हार्मोन दैट इज द रिलैक्शन. रिलैक्शन भी सीक्रेट होगा, लेकिन रिलैक्शन सीक्रेट तब होगा जब आपके पास में पोस्टीरियर कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी होगी. रिलैक्शन. During the pregnancy, production of various hormones is increased. These hormones include the estrogen, progesterone, cortisol, thyroxine, prolactin. The high level of these hormones are essential for the supporting of fetal growth, metabolic changes in pregnancy, as well as maintenance of the pregnancy also. Soon after the implantation of embryo differentiates into the outer means we are the triploblastic. हम लोग triploblastic हैं. Means embryological development takes place in 3 layers. One is the ectoderm, mesoderm and endoderm. Some organs can be formed by the ectoderm, some organs by formed by the mesoderm, and some organs are formed by the endoderm. So triploblastic, 3 layers. And first given there, outer ectoderm, inner endoderm and middle is mesoderm. And these 3 tissues soon gives into the tissues level of body. The inner cell must contain the stem cells. ये क्वेश्चन आ चुका है. और ह्यूमन बीइंग के लिए मेडिकल सपोर्ट सबसे बड़ा बना है स्टेम सेल से. और स्टेम सेल हमेशा इनर सेल मास से ही बनती है. स्टेम मीन्स with the help of that cell we can just develop the particular organ also. आप हार्ट को डेवलप कर सकते हो, लीवर को डेवलप कर सकते हो. दैट कैपेबिलिटी ऑफ दैट सेल, दैट इज द स्टेम सेल. नेक्स्ट, fetal development. When the embryo is differentiated into the different organs, then that is known as the fetus. 1 month fetus, ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन किस में क्या बन जाता है. 1 month fetus में हार्ट फॉर्म हो जाता है. 2 month fetus में limbs और digits are formed. Limbs and digits are formed. 3 month of the fetus, most of major organs are formed. और यही बड़ा कारण है कि after 3 month sex determination is takes place by the doctors. यानी डॉक्टर जो टेस्ट करता है कि डेवलपिंग fetus is male or female, which can be conducted after 3 months on the basis of developing organ. डेवलपिंग ऑर्गन से पता चल जाता है कि ये फीमेल है या मेल है आफ्टर 3 months. नेक्स्ट, 5 month, appearance of hairs on head and the first movement of the fetus. fetus का movement स्टार्ट हो चुका होता है. 6 month, body is covered with fine hairs. eyelids separated, यानी आई की lids होती है upper and lower, they are separated. eyelashes are formed. 9 month, fetus is fully developed and ready to deliver. Next case, that is the partitution process. At that stage, at the nearby month of 9, before that 9 month, relaxin hormone is secreted. At the end of relaxin hormone, the oxytocin hormone is released, and oxytocin hormone is responsible for that part, that is the partitution process. Next, in case of that part, what that thing, that is the complete developing part will be there. The particular developing fetus is there, that is the embryo. embryo के सराउंडिंग यॉल्क रहता है जो आपके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है. अम्ब्रियल कॉर्ड बनता है इसके बीच में, डेवलपिंग फीटस और मदर वॉर्म के बीच में, एंड विथ द वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड लेटर ऑन दैट स्ट्रक्चर इज कनेक्टेड एज द प्लेसेंटा सिम्बलाई. नेक्स्ट, पार्टिलेशन. पार्टिलेशन का मीनिंग होता है प्रसव, यानी जो पोस्ट पार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 month और द 270 days, देयर इज द gestation period. कंप्लीशन ऑफ gestation. gestation पीरियड होता है ह्यूमन बीइंग में 270 days और द 9 month. मे बी वेरिएशन इज देयर. जनरली ह्यूमन बीइंग में gestation होता है वो 9 month होता है. आफ्टर द कंप्लीशन, तो gestation पीरियड आपके क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, 9 month.
और द ग्रेजुअली प्रेगनेंसी, जो आपके पास में ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसको अपन गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। पार्ट्यूशन, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ by which the fetus is expelled or the delivered due to the vigorous contraction of uterus. A fully developed fetus and placenta induce the parturition. Placenta और fetus खुद induce करते हैं parturition को. It causes the mild uterine contraction called as the fetal ejection reflection. यानी fetal में ejection reflection आउट की तरफ प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। The decreases of releasing of oxytocin, oxytocin अमाउंट रिलीज हो जाएगा और मदर खुद के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही पार्टिलेशन हार्मोन कहते हैं। पार्टिशन हार्मोन दैट इज द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द स्ट्रॉन्गर यूट्राइन, यूट्रस की जो वॉल होगी उसको स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी एंड दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। Stimulatory part of positive feedback reflux continuously between the uterine contraction and oxytocin secretion, and that leads to the strong and stronger contraction till the baby expelled out of uterus through the birth canal. Soon after, the fetus is delivered and placenta is also break down. Next, lactation. The production of milk by the mammary glands. फीमेल में मेमरी ग्लैंड से मिल्क का सीक्रेशन तब तक नहीं होगा, भले ही प्रेगनेंसी में मिल्क ग्लैंड डेवलप हो जाएगी, लार्ज साइज हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, मिल्क स्टोरेज भी रहेगा, बट मिल्क इज नॉट सीक्रेटेड। वाई? बिकॉज ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज नॉट रिलीज। जैसे ही पार्टिलेशन प्रोसेस होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज होते ही आपके पास में मिल्क सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और फीमेल में लैक्टेशन मीन्स रिलीजिंग ऑफ मिल्क, सीक्रेशन ऑफ मिल्क। और फीमेल का जो फर्स्ट मिल्क सीक्रेट होता है दैट इज द कोलोस्ट्रम। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। एंड कोलोस्ट्रम हैव कंटेन द नेचुरल एंटीबॉडी, दैट इज द एंटीबॉडी आर पर्टिकुलर पार्ट। The milk produced during the initial few days of the lactation called as the colostrum first, and that is the antibodies, IgA, that is the particular antibodies are there, and the antibodies have provide the resistance and the immunity to the newborn baby. इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट मिल्क का बच्चे को आपके पास में स्तनपान करवाना चाहिए। सो दैट इज द पर्टिकुलर टर्म कोलोस्ट्रम, लैक्टेशन एंड द पार्टीशन एंड द गेस्टेशन। एंड इसी के साथ में चैप्टर नंबर 3 आपका क्लोज हो जाता है in reproduction in human being।